एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। आप सबको नेशन नाउ की तरफ से जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। आप सबको जय सिया राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, शलोम, नी हाओ, कोनिचिवा। प्रदीप जी आगे आप बोलें जो कुछ। हमारी आंखों क्या बात है साहब, क्या बात है साहब, जबरदस्त। बिल्कुल, तो कहने का मतलब ये हुआ कि रामलीला ग्राउंड पर कल ऑन द डे ऑफ ईस्टर, ऑन द डे व्हेन क्राइस्ट रोज, यस यस यस, आफ्टर द क्रूसिफिक्शन, which of course was on Good Friday, on the day of Easter, there's going to be a huge rally. They say it will be the biggest rally Delhi has ever seen. That's what they say, but then that's what everybody says. I remember lots and lots of rallies at Delhi's Ramlila ground. एक तो थी जयप्रकाश नारायण साहब की रैली इमरजेंसी के बिल्कुल पहले, जिसमें राजनारायण भी थे, चौधरी चरण सिंह भी, अपने चंद्रजीत यादव साहब भी, चंद्रशेखर जी भी, और उन सब लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था और उसके बाद इमरजेंसी डिक्लेयर की गई। ये बात है 1975 की, 1975 की। उसके बाद 1977 में जब ये सब लोग जीत के आए, एवरीबडी वाज देयर। आचार्य कृपलानी, जो उस वक्त के सैयद अब्दुल्ला बुखारी हुआ करते थे, शाही इमाम, अपनी जामा मस्जिद के दिल्ली के वो, हेमवती नंदन भगुना जी, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, सब लोग थे वहाँ पे। 77 की बात है। और प्रदीप जी उसके बाद भी न जाने कितनी रामलीला ग्राउंड पर बहुत रैलीज हुई। एक तो बड़ी जबरदस्त रैली थी प्रदीप जी, जब एनटी रामाराव साहब की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था यूजिंग आर्टिकल 356, एंड देन ही पेरेडेड ऑल हिज एमएलएज इन फ्रंट ऑफ द देड प्रेसिडेंट। यस यस यस, मुझे याद है एनटी रामाराव साहब जो थे वो खुद व्हील चेयर पर थे और वो लेकर के गए, उन्होंने दिखाया कि भाई साहब ये लुक एट दिस, इतनी मेजॉरिटी हमारे साथ है और उसके बावजूद आर्टिकल 356 के तहत गवर्नेटोरियल पावर्स यूज करके हम लोगों को बर्खास्त किया गया है। एंड दैट वाज अ फैंटास्टिक रैली। आई रिमेंबर फारूक अब्दुल्ला बीइंग देयर, आई रिमेंबर अटल बिहारी वाजपेयी स्पीकिंग सो ब्यूटीफुली। वाओ, what a massive, what a fantastic speech that was. That was really and truly wonderful, absolutely wonderful. But there's one thing about that speech I still remember. वो क्या था, थोड़ी गलती हो गई ऑर्गेनाइजर से, ये जान के किया गया मुझे मालूम नहीं, क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स जो थे ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग थे। यस यस। तो एनटी रामाराव को आखिर में लास्ट स्पीकर रखा गया, उसके पहले वाजपेयी जी। अब जैसे ही वाजपेयी जी ने अपना भाषण खत्म किया, सब लोग जितने भी संघ के जितने लोग थे सब खड़े हो गए, सब चले गए। एंड एनटी रामाराव, आई रिमेंबर, addressed an almost empty Ramlila ground, except for the press. Everybody else had already left, which was rather sad. But then that was a great rally. And the Ramlila ground per se is not as big as the boat club. Boat club पे तो आजकल rallies allowed ही नहीं है। तो जो बोट क्लब की जो एक शान हुआ करती थी, जहाँ पे लाखों लोग आया करते थे दिल्ली में, वो सब अब खत्म हो गया प्रदीप जी। वो सब वक्त खत्म हो गया। एंड मेन थिंग इज सर, दीज आर इंसिडेंसेस वेयर द कांग्रेस कटघरे में खड़े हैं कि हाउ दे had done and how they had violated all norms of democracy. That's right. So there have been instances where the Congress, by whichever way, has been doing work against the constitutional norms, and still they got away with it. They did. And now you have Congress on the other side of the spectrum, other side of the stand, telling us that yes, ab loktantra ab khate mein hai. Yeah. So things have changed. Things have changed. So a lot of things Congress will have to first reason out within itself. How are you going to defend yourself when you say लोकतंत्र खतरे में? जो कल के जो मोर्चा है, यह लोकतंत्र को बचाने के लिए महासंग्राम, लोकतंत्र को बचाने के लिए महासंग्राम। So now they believe that the democracy is in danger. The pillars of the constitution are shaken by the misrule of the current government.
and they talk about the excesses of the government, totalitarian, autocratic and anti-democratic rule of Prime Minister Modi. It says you misuse of all agencies, central agencies. They talk about all the way. In fact, now they don't talk about judiciary ko threaten karna or intimidating the judiciary, but earlier they didn't talk about intimidating the judiciary. Now all the other charges are there. Opposition is being targeted, minority are living under fear, there is right-wing activism out of the front. I ask you, Pradeep ji, what is your personal opinion? Are minorities living in fear? I mean, I haven't seen that. Not here anyway, not in Bombay. मुंबई में जिस जगह पर हम लोग हैं अभी आज की तारीख में, वहाँ पर कितनी मस्जिद हैं? सब 14 हैं, 12, मुझे याद नहीं है कितनी है. मतलब I don't see any fear anywhere. I don't see it. Maybe it's there in Uttar Pradesh. हो सकता है, मुझे मालूम नहीं है. If BJP calls it, non-appeasement, our policies doesn't appease anybody. Now that is an element of fear which the Congress is trying to create or instigate probably. Appeasement of none is their basic goal, that everybody is equal before the eyes of law. Service for all, service for all, appeasement of none. That's what they're saying. So, and so far, Pradeep ji, they haven't been wrong. I mean, come to think of it. अब जैसे बार बार वो कहते हैं कि भाई अगर नहर बनती है, पानी आता है, तो क्या मुसलमान के खेत में नहीं जाता? मतलब क्या है? जो नल से जल है, वहाँ पर पानी को ये मतलब प्रोग्राम किया हुआ है कि मुसलमान के घर में नहीं जाएगा. मतलब ये क्या मतलब हुआ? अगर कोई फंड्स मिल रहा है, राशन 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है, तो क्या उसमें भेदभाव है क्या? I really would love to know. आयुष्मान में भेदभाव है क्या? उज्ज्वला में भेदभाव है क्या? So PM किसान में भेदभाव है क्या? So all these things. No, but that's a charge. That's a very vague charge, very frankly speaking. And as I have been saying all along, right from day one, that the number of communal riots which have taken place under Congress rule are huge. There has been exactly one major riot which has taken place under BJP rule, which was in Gujarat. That's it. Uske alawa, what can you point out? I mean, there has been no communal riot anywhere else. अगर आप मणिपुर की तरफ अगर आप इशारा करते हैं, तो मणिपुर is a sectarian violence, where one particular tribe is fighting with another tribe. Exactly. That's it. लेकिन जहाँ तक आपका सवाल है, अरे भाई उंगलियां खत्म हो जाती हैं साहब गिनते गिनते. मुरादाबाद, भागलपुर, देवली, ये क्या है अपना हाशिमपुरा, मलियाना, मतलब कितनी गिनाऊं? कर क्या रहे हैं आप लोग? और उसके अलावा असम में नेली, 2,191 Muslims killed in just half an hour and nobody punished. ये क्या है? और आप जाकर के किस मुंह से आप ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी has been attacking Muslims? I don't know. But they've certainly not given a ticket to Muslim candidates. There's only one Muslim candidate, I think, from the entire list of the BJP candidates released so far. But that's the party's choice. They take a look at winnability. कहाँ से जीत सकता है, कहाँ से नहीं जीत सकता, that's it. Pradeep? Exactly, sir. I mean, if you talk about the way BJP is moving ahead, because they are, for general elections, the people's mood is totally on nationalism, national security, or whether the development has taken place, whether all along the government has been fair. And in all these counts, in the top 3 count, the Modi government is far ahead. The boundaries are safe, the जो बोलते हैं कि सीमा एब्सोल्यूट सुरक्षित है, and the government is जो घर पे घुस के मारने वाली जो उनका स्टैंजा है कि we will not tolerate any attack on our border, on our army, and that they have stood by it by the way of surgical strike and Balakot strike. And it's very natural that they will show that these are the things that we do if anybody tries to intimidate us. And so where security and Rashtravad hai, nationalism is concerned, BJP is way ahead, and I don't think anybody comes close to them. Rahul Gandhi still has to show a lot of maturity where national security and nationalism is concerned. Now that is what we need to understand, ki what does he have to say where China is concerned, where Pakistan is concerned. How strong is the Congress's policies? Because after 2016, यहाँ पर तकलीफ ये आ जाती है, सबसे बड़ी बात ये आ जाती है that as far as the Congress is concerned, कांग्रेस को अपना केस सामने रखना आता ही नहीं, सीधी बात है. Because each time they talk about China
और ये कहते हैं कि मैं 42,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो चाइना ले गया, ऑल दैट द बीजेपी हैज टू डू इज टू पॉइंट टू 1962 कि 1962 में आपने ऐसी की तैसी कर दी, 1957 में अक्साई चेन पूरा का पूरा चला गया, और उसके बाद चाइनीज ने जो टेरिटरी ले ली वो तो मतलब बड़ी मुश्किल से वापस आई है हिंदुस्तान के पास, तो उसके बारे में तो आप बात ही ना करें। राइटफुली द कांग्रेस शुड बी टॉकिंग अबाउट 1967, दे शुड बी टॉकिंग अबाउट द चोला पास, हाउ दे एंड द नथुला पास, हाउ दे मैनेज टू ड्राइव द चाइनीज आउट ऑफ देयर। उसके बाद ड्यूरिंग मिस्टर राजीव गांधी's time as prime minister, when General Sundarji was a COS, Chief of Army Staff, he drove the Chinese out of God knows how many thousands of kilometers in the northeast. अब उसके बारे में आप बात नहीं करेंगे, आप अपने आप को हमेशा डिफेंड करते रहेंगे। आपको मालूम है कि सामने से क्या हमला होने वाला है आपके खिलाफ, उसके बावजूद अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं तो who can help you? I don't see the Congress really getting its act together right now. I'm really disappointed, and I've been waiting, and so have you, and so has the rest of the country, for Mr. Rahul Gandhi or Priyanka ji to announce their candidature from Amethi and Raebareli. They still haven't done so. And they don't seem to be doing that. I mean, they are not probably going to do that. And at this particular time, to fight from two constituencies is slightly unfair. You're being unfair to your constituencies. Now, which are you going to nurture? You cannot do justice to both. I mean, you need to understand from where you are. स्मृति ईरानी जी जो बोल रही हैं कि भाग गया वायनाड, तो आप उसका जवाब कैसे देंगे? आप बताइए ना, हाउ? ये क्या है? मतलब आपको लड़ना चाहिए, यू आर द लीडर ऑफ द पार्टी, हारे तो हारे, जीते तो जीते, मान लीजिए जीत गए, फिर क्या? कैन यू इमेजिन दैट प्रदीप जी? Exactly. अगर आज राहुल गांधी अमेठी से खड़े हो जाते हैं, प्रियंका गांधी जी खड़ी हो जाती हैं रायबरेली से, और दोनों जीत जाते हैं, अरे साहब, it will be like a revolution in the whole polity of the country. Everybody is going to wake up and take the Congress very, very seriously. So my point is, why can't you do it? Why aren't you doing it? I'm at a loss. I'm not able to understand this Congress strategy. ये कांग्रेस की रणनीति क्या है, मेरी समझ के बाहर है साहब. They are not putting the BJP under pressure where they can easily do so. Why aren't they doing it? God only knows. Who are the advisors of Mr. Rahul Gandhi? I don't know. Pradeep ji, and all these things are done long before. I mean, you don't do it in the last minute. If you are nurturing Wayanad, you have been working continuously for Wayanad, you have been visiting Wayanad. So if you are making that your particular constituency, then go ahead with that. Then don't fall for the CPM saying that you are fighting us and then we are together in the center, we are alliance partner, we are part of the India alliance, then why are you fighting us? You can't have two ways where politics is concerned. You stick to it, you take a decision, you stick to it. You don't do everything in the last minute because it's not there. I mean, you're already elected member from Wayanad. You've been working there for 5 years. So you decide if you're fighting Wayanad, then you take off. I mean, you need to have your own source of how you deal with local problems. Your own local problem was how to take on CPM. And you should have easily done it, a compromise or whatever they can, which they always do, and they are a part of the India alliance. So now, अमेठी में न जाना तो क्लियर कट है कि अमेठी नहीं जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे हैं, we are nurturing. So why that ambiguity within the party, within the leadership, that people, in fact, many of the Congress spokespersons who had come were saying that yes, we are awaiting decision on Amethi. So they always give a ray of hope, saying something is going to happen where Amethi is concerned. But then ultimately, I think the days are also over. So that thing is very clear. That तो ये आप मतलब कहने का मतलब ये हुआ, you have left Uttar Pradesh to its own fate. Yes. कि अगर जीते तो जीते, नहीं जीते तो नहीं जीते. मतलब जैसे 2004 में अगर आपको याद होगा, सडनली 20 सीट लेकर के आ गए थे ये उत्तर प्रदेश से. अब वो कैसे हुआ? यू हैव टू वर्क आउट द फॉर्मूला. क्या फॉर्मूला था साहब जिसकी वजह से आप लेकर के आए? अब आज की तारीख में जहाँ तक कांग्रेस का प्रश्न है, क्योंकि आप कंपैरिजन देखिए, बीजेपी राइट और रॉन्ग हैज इट्स प्लान्स कंप्लीटली एंड टोटली इन प्लेस. बीजेपी की जितनी प्लान है, जितना सब कुछ है, एक एक चीज मालूम है सबको. एवरीबडी राइट डाउन to the last स्वयं सेवक and कार्यकर्ता of the भारतीय जनता पार्टी or the स्वयं सेवक of the RSS knows what his role is or her role is. यहाँ पर अब लीडरशिप को ही नहीं मालूम उनका क्या रोल है, तो वो कार्यकर्ता को क्या बताएंगे प्रदीप जी? ये तो मुझे मतलब बड़ा अजीब लग रहा है. ये सर वो ऐसे नहीं चलता है. This is not done as far as I think. आप बताएं प्रदीप जी. मुझे 80 seats in Uttar Pradesh, and whoever wins Uttar Pradesh will probably win 2024. Yes. Modi has absolute, Prime Minister Modi has made himself very clear. Yes. He is going to battle out in Varanasi.
and And he has left his seat in Gujarat. exactly, he is left with गुजरात छोड़ दिए साहब, बिल्कुल उनका भाई मैं तो काशी से खड़ा हूँगा। बिल्कुल, और That's it. बार-बार जाके अपने माँ गंगा constituencies ने को मुझे बुलाया है और अभी तक उन्होंने माँ गंगा का जो भी उनके ऊपर कर्जा था वो अब सूद समेत लौटा रहे हैं। सीधी बात है साहब। exactly. अब अमेठी का जो कर्जा आपके ऊपर है राहुल गांधी साहब, अब आपको भी लौटाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है वहां से राहुल गांधी जी को लड़ना चाहिए, भले हारो या जीतो, क्या है उसमें, कोई गांधी होना चाहिए साहब। अमेठी से, रायबरेली से मेरी ये समझ में नहीं आ रहा प्रदीप जी, इतना डर का है का? आप रणभूमि में हैं, आप हारेंगे या जीतेंगे, ड्रॉ होने की तो संभावना है नहीं। सो यू हैव टू गो आउट देयर एंड फाइट। सो व्हाई आरंट यू फाइटिंग? Yes. Now you have to lead from the front, knowing very well how Mr. Modi has taken UP by its horns, saying that I need to win here. We all need to get Shat Pratishat UP so that 2024 comes back to us. What is the Congress strategy? What are you doing? Because Rahul Gandhi की जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा था, went through UP along with Akhilesh Yadav, he made a formidable force. It was a formidable force with people out on the streets and with them chanting slogans that we are going to come back in 2024. The rallies of Rahul Gandhi through Uttar Pradesh to wherever he went in Uttar Pradesh was fabulous. I mean, the crowd participation was huge, unbelievable. It was like they were overwhelmingly on their own, by their heart, have come and attended Rahul Gandhi's rally. So, when he has done all these things, when he has moved the Bharat Jodo Yatra from Uttar Pradesh, now you need to do something to wrest Uttar Pradesh away from BJP. So you have to be there. The leader has to be there. He has to be on the forefront fighting out in UP that I am going to see that this entire, जो शत प्रतिशत आपका नारा है वो गलत है. Maximum seats are going to come to this alliance of India Alliance. और दूसरी चीज क्या है प्रदीप जी? Rahul Gandhi and Akhilesh Yadav are fighting it together. और दूसरी चीज क्या है? There is one thing that India Alliance needs to be satisfied about. They finally got their act together in terms of what they are offering. अब जो उन्होंने कहा है कि भाई हम पुरानी पेंशन स्कीम दोबारा लागू करेंगे, अग्निवीर की जगह पे जो पुरानी रिक्रूटमेंट स्कीम थी जहाँ पे आपको परमानेंट जॉब मिलेगी आर्म्ड फोर्सेस में, वो हम लोग लागू कर रहे हैं। जो 38 लाख वैकेंसीज जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की और बाकी 1 करोड़ से ज़्यादा जो वैकेंसीज हैं बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स में, वी आर गोइंग टू फिल देम इमीडिएटली। प्लस जो व्हाट यू आर फॉन्ड ऑफ सेइंग कि राहुल गांधी हैज प्रॉमिस्ड योर फर्स्ट जॉब इज माय रिस्पांसिबिलिटी। Yes. आपकी पहली नौकरी मेरी रिस्पांसिबिलिटी है 1 साल के लिए, मैं दूंगा आपको। उसके अलावा वजीफा औरतों के लिए, मतलब रिटेन अ काइंड ऑफ थिंग और सम मनी, some allowance will come from the government to all women above the age of 18. Now, irrespective of whether there being a budget for that or not, where they will find the money, that's their problem. But at least they should start talking about it. And number two, the very funny part, Pradeep ji, is I find that the opposition, apart from Aam Aadmi Party, and do remember here, this is a very important point, there are only 2 parties which have grown, which have shown growth in the last 10 years. सिर्फ 2 पार्टी हैं जिन्होंने अपना वोट शेयर, अपना इलाका बढ़ाया है। सबसे पहली तो है भारतीय जनता पार्टी और दूसरी है आम आदमी पार्टी। Only 2 parties. All the other parties have shrunk, or they have tried to hold on to whatever little fortresses that they have, or land holdings that they have. The Aam Aadmi Party has moved from one state to being in government in 2 states. Apart from that, they have a huge presence in Gujarat. 13.5% वोट आए साहब उनके वहाँ पे गुजरात में। गोवा के अंदर भी उनका कोई एमएलए जीता शायद, जहाँ तक मेरा ख्याल है। Exactly. उसके अलावा इवन इन राजस्थान and a little bit in Haryana, but they have grown. The other party which has grown is the Bharatiya Janata Party. These are the only 2 parties that have grown, and only the Aam Aadmi Party is talking about the elephant in the room, that is the electoral bond. क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं, अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल करके पूरा ध्यान जो है केंद्रित कर दिया केंद्र ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर, so that now instead of being just Modi versus Rahul Gandhi, it is now Modi versus Arvind KEJRIWAL. अब आप हर जगह पे देखें Arvind KEJRIWal has maneuvered things in such a way, or maybe he has had help from the BJP. And I always keep saying, by the way,
कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कोई खास फर्क नहीं है साहब, दोनों एक ही हैं। बोल रहा हूं मैं आपको, फिर बोल रहा हूं, आज की तारीख में इट इज नरेंद्र मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल, इवन दो केजरीवाल इज अ वेरी स्मॉल पार्टी, छोटी सी पार्टी है, और वो छोटी सी पार्टी इतना शोर मचा रही है, इतना शोर मचा रही है, इतना शोर मचा रही है कि बाकी सबका शोरगुल जो है वो खत्म हो रहा है। Now I want to know, where does the Congress fit in over here, Pradeep ji? Now the Congress. No, the question that I wanted to ask you is, where does the Congress fit in here, Pradeep ji? इसके ऊपर जरा आप रोशनी डालें, प्लीज। कांग्रेस इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में क्यों बात नहीं कर रही है? क्या हो गया? Why aren't they talking about it? I thought they would be holding at least 6 press conferences every day. Instead of that, what are they talking about? They're talking about the income tax notice sent to them. But nobody cares. आपने अगर भाई 1780 करोड़ या 1800 करोड़ आपका बकाया है तो दो। इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में बात करो ना भाई। आप कहते हो कि ये इलीगल है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलीगल है, आप कहते हो कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने गलत किया है, गैर कानूनी ढंग से उन्होंने किया है, तो बताइए लोगों को क्या गैर कानूनी ढंग क्या है, बताइए प्रदीप जी। Now they are talking about electoral bonds but in a very subtle manner. जी। राहुल गांधी जी बहुत दिन पहले बोले थे, उसके बाद जयराम रमेश वगैरह सब चिल्लाना शुरू कर देते, चंदा दो धंधा लो, चंदा दो धंधा लो, टेका लो चंदा दो, हफ्ता वसूली, शेल कंपनीज के माध्यम से चंदा लेना, तो they are doing it very very discreetly. Why? But as you but say, why? But I need to know why. Because the BJP probably retaliation was a very forceful retaliation. What they said, उनका कहना है कि 20,000 करोड़ है, single largest party in the parliament, 303 absolute majority हमारा है, and we have got only around 6,800 crores. But right, so 14,000 crores के आसपास. By the way, that is a facetious argument, because the argument is not about how much who has got, but it is how you have got it. Because the argument on the other side is कि आपने रेड करवाए, उसके बाद आपको पैसे मिले। अभी सर जितने भी कंपनीज है उनको कोई प्यार से तो कोई जाके देंगे नहीं अपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स। मैं मानता हूँ। टॉक अबाउट बीजेपी, नाउ मोस्ट ऑफ द स्टेट रीजनल कंपनी, यस पार्टी जो है, कलयुग है, दे ऑल हैव टेकन द सिमिलर वे, सो वेयर इज द आर्गुमेंट? प्रदीप जी, कलयुग है, एवरीथिंग इज डन विद स्मोक एंड मिरर्स, एवरीथिंग इज एन इल्यूजन। वो इल्यूजन आपको क्रिएट करना पड़ेगा, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने पहली हथियार डाल दिए हैं सर। So they probably show all these places for where state governments जहाँ कांग्रेस के हैं वहाँ पर किस प्रकार से ले लिया, तो करने दीजिए, ऐसी क्या बात है? तो then तो करने दीजिए। तो मेरा ये कहना है, लड़ाई में अगर आप हैं करने दीजिए, प्रॉब्लम क्या है? मेरा सर ये कहना है कि अगर आप रणभूमि में अपने हथियार ही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर आप रणभूमि में हैं क्यों? सो आई काइंड ऑफ टेंड टू बिलीव our BJP spokesperson when they come over here and say इनको पिछली बार 54 मिले थे, 54 में से कट के 52 रह गए। अब मुझे लग रहा 25 भी नहीं आएंगे, हो सकता है 30 भी क्रॉस ना कर सकें। तो प्रधानमंत्री जी ने जो बोला था अपनी स्पीच में कि इस बार हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी 30 भी क्रॉस ना कर पाए, आई थिंक दैट माइट कम ट्रू। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द DMK might get more than the Congress, and the number 2 party will be Aam Aadmi Party. Exactly. One never knows. This is the way, at least they are being aggressive in protecting their turf, Pradeep ji. Look at the DMK. Look at how they are battling it out, fighting it out. Aam Aadmi Party fighting it out. Now, what is the Congress doing? Even in महाराष्ट्र में जहाँ पर ये लग रहा था कि MVA का बहुत बढ़िया चांस है साहब यहाँ पे महायुति को डिफीट करने का, अब यहाँ पर भी सब गुड मॉर्निंग हो गई सर प्रकाश अंबेडकर जी के जाने के बाद। लेट्स आस्क अरुण सावंत जी इस वक्त हमारे साथ हैं।